Yes, good morning children. Myself Poonam Saini. Okay, so today we will read chapter 6 tissue, permanent tissue. As in our previous video we have read about meristematic tissue. The second type of tissue, permanent tissue, we will read today, and the types of permanent tissue. So among types we will read today simple permanent tissue. Okay, permanent tissue. As we have read earlier, permanent tissues are those tissues which we call dividing tissue. Meristematic tissue were those which we call dividing tissue, which divide continuously, and permanent tissue, non-dividing tissue. So these non-dividing tissue formed from meristematic tissue. तो permanent tissue किससे बनते हैं? Meristematic tissue से. Now how they form from meristematic tissue? See, meristematic tissue was dividing tissue. When this meristematic tissue takes a specific role and lose the ability to divide, they form permanent tissue. Meristematic tissue जब divide होता है, it take up specific role. If it take up specific role, है ना, वो divide करना stop कर देता है, तो it form permanent tissue. Now permanent tissues are formed from meristematic tissue by a process called differentiation. Okay, what is differentiation? It is the process of taking up permanent shape, size and function. So permanent tissues are formed from meristematic tissue by the process of differentiation. Clear? Now, types of permanent tissue. Permanent tissues, we can categorize them into two types basically: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Third one, we can say it is protective tissue. Basically it is a part of simple permanent tissue, but on the basis of function we categorize it as protective tissue. Okay, so simple permanent tissue. What are simple permanent tissue? Why we are calling it simple and this one complex? Both are permanent tissues, but this tissue, simple permanent tissue, are the tissue which are made up of one type of cells, and complex permanent tissue are the tissue which are made up of different type of cells. Just recall the definition. हमने previous video में starting में tissue का definition पढ़ा था, है ना? तो what was that? कि tissues are a group of cells, okay, similar or dissimilar in structure. कि cells which form tissue, they may be similar in structure or dissimilar in structure. So in simple permanent tissue, cells are similar in structure. So this is a tissue made up of one type of cell, and in complex they are made up of dissimilar type of cells. It is made up of different type of cells, but both, okay, whether it is simple or complex, these tissues perform a common function. Okay, whether it is made up of one type of cell, so it perform a common function. If it is made up of different type of cells, so different type of cells also they together perform a common function. Okay, so simple permanent tissue we will read today. Types of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. See, permanent tissue, simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And in complex permanent tissue, two types we will read: xylem and phloem. So, types of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So, comparative study we will do, okay, and differences also come in exams, whether it is between parenchyma or collenchyma, or between parenchyma, sclerenchyma, or collenchyma or sclerenchyma. Okay, so just look carefully. Parenchyma, it is a living tissue, means it is made up of living cells. Collenchyma is also living tissue, but sclerenchyma is a dead mechanical tissue made up of dead cells. Parenchyma, if we talk about cell wall of the cells which make this tissue, the cell wall is thin. In collenchyma, cell wall is thin, but it is thick at the corners of the cells. Okay, and in sclerenchyma, cell wall is thick. Now, which substance
make this cell wall? तो cell wall of parenchyma is made up of cellulose. So we can call it कि cell wall cellulosic. Cell wall किसकी बनी होती है parenchyma में? Cellulose की, और ये thin होती है. Collenchyma में cell wall cellulose की ही बनी होती है ना? बट cellulose का डिपोजिशन कहाँ ज़्यादा होता है? कॉर्नर्स पर ज़्यादा होता है. दैट इज वाई सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, एक्स्ट्रा सेल्यूलोज. ओके. एंड इन स्क्लेरेंकाइमा सेल वॉल थिक है और किस सब्सटेंस की बनी है? लिग्निन. तो वी कैन कॉल इट सेल वॉल लिग्निफाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन. ओके. लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके डिपोजिशन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते. ओके. नाउ इंटरसेल्युलर स्पेसेस. इंटरसेल्युलर स्पेसेस द स्पेस बिटवीन टू सेल्स. दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है इट इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस. तो इन पेरेन्काइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर लार्ज. बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं. कोलेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर लिटिल, थोड़े होते हैं, है ना, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट. And in sclerenchyma, intercellular spaces are totally absent because cell wall is thick. Okay. Now, we can see it in this in diagram also. Structure of parenchyma we can see. These are the cell, and you can see intercellular spaces. These are intercellular spaces. These are between the two cells. Okay. And this is thin cell wall. Cell wall is thin and cell structure as we have read earlier कि inside a cell है ना nucleus is present. Okay, this is the nucleus of the cell and large vacuole is present in the plant cells. So these are the plant cells. Parenchymatous tissue is a plant tissue. So it is plant cells structure is same as in all plant cells कि one nucleus is present, large vacuole is present. Okay. So this is the structure of parenchyma. Just we can see collenchyma structure. We have read कि cell wall thin होती है but thick at the corners. See deposition of cellulose at the corners. So that is why thick corners. Otherwise vacuole is present inside the cell. Okay. And this is the cell wall. Okay. And we can see sclerenchyma structure also. Sclerenchyma. So there is just see no intercellular spaces. Cells are tightly packed, है ना, एक सेल दूसरी सेल से बिल्कुल अटैच है, टाइटली पैक्ड है. देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस एंड सेल वॉल, just see cell wall, this is made up of lignin. So this is the thick cell wall. This is the cell membrane and cell membrane के बाद this is thick cell wall. Okay. So these are the three tissues: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now come back to the location कि where parenchyma is present in the plant. किन plant parts में parenchyma present होता है. Okay. तो parenchyma it is found in the soft plant parts like cortex of stem, root and mesophyll of leaf. When we will read internal structure, है ना, टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वी कैन सी सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है एपिडर्मिस, है ना. एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स. तो इट इज अ बिग पार्ट. ओके. तो दिस बिग पार्ट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा इन स्टेम्स एंड रूट्स एंड मीजोफिल ऑफ लीफ. ओके. मीजोफिल लीफ में दो एपिडर्मिस होती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच का जितना भी टिश्यू है इट इज कॉल्ड मीजोफिल टिश्यू. तो दैट मीजोफिल टिश्यू इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. ओके. तो पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स लाइक कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, रूट एंड मीजोफिल ऑफ लीफ. नाउ इफ विल टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, तो इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम. just now I told you कि below the epidermis, outermost layer, है ना, if we see internal structure TS of dicot stem, तो outermost layer होती है epidermis, epidermis के just नीचे होती है hypodermis. तो hypodermis in dicot stem is made up of collenchyma. Now one question came to your mind कि what is mean by dicot and what is monocot. Okay, तो dicot, di means two
कॉट मीन्स कॉटिलिडन, ये सीड में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिन सीड्स में 2 कॉटिलिडन होते हैं तो वी कैन कॉल डाइकॉट्स. नाउ हाउ कैन यू केम टू नो कि दिस इज अ डाइकॉट और मोनोकॉट? जस्ट सिंपल, इफ यू सोक अ सीड इन वाटर, है ना, एंड इफ इट स्प्लिट इनटू 2 तो इट मीन्स इट इज अ डाइकॉट, सच एज राजमा, है ना, बीन्स होते हैं, जितने भी पल्सेस हैं, अगर आप उनको सोक करते हो ओवरनाइट, आप भिगोते हो तो वो स्प्लिट हो जाता है इजीली, है ना. राजमा को आपने सोक करके देखा होगा. तो दीज आर डाइकॉट्स. ओके. एंड मोनोकॉट, ऑल द ग्रासेस, जितनी भी ग्रासेस हैं, ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, है ना, दीज ऑल आर मोनोकॉट, क्योंकि उनको अगर आपने यू देखा होगा कि कभी भी सोक करते हैं सीड्स को, व्हीट को या राइस को, तो इट विल नॉट स्प्लिट इनटू 2, वो बीच में से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बट इट विल नॉट स्प्लिट लाइक राजमा. ओके. तो ऑल द ग्रासेस एंड ऑल द फूड ग्रेन्स आर मोनोकॉट्स, है ना. इट इज अ सिंपल वे टू आइडेंटिफाई मोनोकॉट एंड डाइकॉट. नाउ कॉटिलिडन्स का फंक्शन होता है इट स्टोर फूड, ओके, विच इज यूज्ड व्हेन सीड इज जर्मिनेटेड. तो सीड्स में प्रेजेंट है कॉटिलिडन, ओके, और ये फंक्शन क्या है, जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो कॉलेनकाइमा फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम. मोनोकॉट्स में कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है, तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन द below the epidermis of the dicot stem. Okay. And it is also present in the leaf petiole. Petiole means stalk. तो leaf का जो stalk होता है, here also collenchyma is present. Now sclerenchyma. Sclerenchyma location, it is present in stems around vascular bundle. Stems में vascular bundles के को surround करते हुए present होता है vascular bundle, है ना. वस्कुलर बंडल्स आर मीन्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कि प्लांट में फूड है, वाटर है, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो वस्कुलर बंडल्स दे आर मीन्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होगा. इन द वेन्स ऑफ लीफ, देखो लीफ के स्टॉक में तो प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा, और लीफ की वेन्स में, वेन्स और वेनलेट का नेटवर्क होता है ना. Have you seen the network of veins and veinlets in a leaf? So there, in the veins and veinlets, this sclerenchyma is present. And in hard covering of seeds and nuts, seeds और nuts के hard covering में, and husk of coconut, coconut का जो outer part है, hairy जो part होता है, it is called husk, and it is made up of sclerenchyma. So sclerenchyma is present there also. So this is the location of different type of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Functions also we can look here, है ना. In detail we'll read. So function of parenchyma, the main function of parenchyma is storage. So it store food. Also it provides support to the plant as it made maximum part of the plant. Okay, it makes maximum part. Now collenchyma, it provide flexibility and mechanical support to the plant. Flexibility it provide. That is why leaves, branches, they bend without breaking, है ना. यहाँ collenchyma flexibility provide करता है. तो have you seen petioles? They are moving with the air without breaking because of this collenchyma, because it provide flexibility. Now function of sclerenchyma, as it is a dead tissue, so it provide mechanical support and strength to the plant. So this is the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now functions of parenchyma, we'll see this in detail. We have to read function of parenchyma. This is the structure of parenchyma tissue. It provides support to the plant. It stores food. Also it stores toxic substances. The main function is of parenchyma is storage. So parenchyma of stem and roots store water and nutrients. स्टेम और रूट के पेरेनकाइमा वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर करते हैं. ओके. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. सी समटाइम पेरेनकाइमा कंटेन क्लोरोफिल. कभी कभी पेरेनकाइमेटस जो सेल्स होती हैं दे कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ओके. तो इफ
parenchyma contain this chlorophyll, so it perform photosynthesis and then it is called chlorenchyma. So we can say कि if parenchyma contain chlorophyll, so we can call it chlorenchyma. Likewise, in aquatic plants means plants which grow in water. तो अगर aquatic plants में है ना parenchyma है, तो this parenchyma contain large air cavities. इनमें large air cavities होती हैं. तो air get filled in these air cavities, है ना. तो it give buoyancy to the plant to help them float. प्लांट को कैपेबल बनाती है कि इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर सकता है. सो इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा. सो वी कैन से कि इफ पेरेनकाइमा इट कंटेन एयर कैविटीज, तो देन इट इज कॉल्ड एरेनकाइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स. तो इट हेल्प प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर. So these are the two types of special type of parenchyma. One is chlorenchyma and second is erenchyma. Okay. So in functions we have read these two types because the function of parenchyma is to perform photosynthesis. Okay. And second one is help the plant to float on water. Okay. So these two special type of parenchyma, they perform these functions. Now functions of collenchyma. As I told you earlier, कि collenchyma provide flexibility to the plant parts. It help in easy bending of leaf and stem. Stem, we are talking about branches here, without breaking. Because collenchyma provide flexibility, so these parts where this collenchyma is present, so they can bend easily without breaking. बिना टूटे मुड़ जाते हैं. Third is, it also provide mechanical support to the plant. Here you can see the picture of collenchyma. Okay. Now functions of sclerenchyma. It makes plant hard and stiff. Plant को hard बनाता है, stiff बनाता है. Okay. It forms protective covering around seeds and nuts. As we have read कि it is located where? Outer surface of seeds and nut it is present. Sclerenchyma is present there. So it form protective covering around seeds and nuts. As it is a hard tissue, it is dead tissue. Now ropes and mats are made up of sclerenchyma. Sclerenchyma, it is present in the husk of coconut, and that husk is made for is used for making ropes and mats. So these ropes and mats are made up of sclerenchyma. Clear? स्क्लेरेनकाइमा कोकोनट के हस्क में प्रेजेंट होता है और हस्क का यूज होता है रोप्स और मैट्स बनाने में. तो स्क्लेरेनकाइमा हेल्प कर रहा है किसके फॉर्मेशन में? रोप्स और मैट्स के फॉर्मेशन में. ओके. दिस स्क्लेरेनकाइमा इफ वी टॉक कि इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, है ना. एक तो सर्कुलर सेल्स होती हैं और दूसरी कैसी होती है? इलोंगेटेड सेल्स हो सकती है. ओके. सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और इलोंगेटेड फॉर्म्स में भी हो सकता है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेनकाइमा, collenchyma and sclerenchyma. Okay. I think it is clear. Structure of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, then their location and then their functions. Okay. So this is all for today. Thank you.